To measure that in meter will be little impractical. Now we'll be doing the second part of this chapter. This chapter has three parts. First was the knowing the fundamental quantities, finding the dimension, and application of dimension. Second part is measurement, all the methods of measuring the quantities, and then we will see the possible errors and how to express that errors in the significant figure and all rounding of significant figure. So you can say this is like the basic of maths that we will be using. Fine. Similar chapter is there in chemistry also, the first chapter thing, right? So practical units, some practical units for measurement. We saw the standard unit, SI units for measurement, and we also use their dimension for dimension analysis. Practical units for measurement. So like for example, to measure the size of nucleus on nuclear level, the unit used is Fermi. So I'm just quickly writing short form. That's not required to write a dimension. This is just for information. Fermi is what? Is used for measuring the is used for measuring the nuclear size or size of radius of nucleus. One Fermi is how much? One Fermi is 10 to the power minus 15 meter. In short form, we write it as 1 Fm, also called as femtometer, 10 to the power minus 15 meter. Right? That's one of the standard units. Similarly, angstrom. Angstrom is used for the size of an atom or the bond length. It's angstrom. One angstrom is used for size of atom and used for the wavelength or something. Yeah. Govind, Sir, used for measuring the size of atom. Size of atom is of the order of angstrom. Wavelength is of the order of angstrom. So there are many uses. I mean, when there is a very small measurement, we do that. We do that with the help of. Okay, so right. Fine. So it is used for measuring the size of atom or maybe for the wavelength. And one wavelength is an angstrom. Size of atom is angstrom, and one angstrom is how much? One angstrom is 10 raised to the power minus 10. Denoted as 1A 10 raised to the power minus 10 मीटर. सो ये तो कॉमन नोन जो आपको पता ही है. कुछ और इसके अलावा नैनोमीटर, माइक्रोन, these all you know. Some some units, so some practical units of length. This is for small distance. For small length, very small length rather, measurement के लिए हम use करते हैं Fermi and angstrom and nanometer. Nanometer is 10 raised to the power minus 9. Is my voice echoing? No, sir. Okay, 1 nanometer is 10 raised to the power minus 9. Similarly, one micron or micrometer, 1 micron is 10 to the power minus 6. So this, I think you know. Some very large distances are measured in some other units. Practical units for large distance. Units for large distance or length measurement. So light year. Light year is basically the distance covered by light in 1 year. The speed of light is 299,467 something, but we assume it to be we assume it to be 1 3 into 10 to the power 8. So light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. The distance traveled by light in vacuum in 1 year. So how much is that? Distance is speed into time. So 1 light year, short form, we write it as Ly.
3 into 10 raised to power 8 multiplied by 365 into 24 into 60 into 60, which is 9.46 into 10 raised to power 15 meter. 1 light year is 9.46 10 raised to power 15 meters. Okay. Similarly, another bigger unit is astronomical unit. So हमें सिर्फ definition भी समझनी है. Maybe you might be knowing the value. You might be knowing what exactly is one astronomical unit. But now we also have to try to understand how it is related with the length. The light year is distance traveled by light in one complete year. One astronomical unit, anybody knows? How we define one astronomical unit? Like what exactly is one astronomical unit? Anyone? Earth from sun. Right. So this is the mean distance or average distance from the Earth and Sun. Correct. Average distance between who answered? Sia. Who answered? Sia. Tia. Okay. The average distance between Earth and Sun is defined as one astronomical unit. वैसे तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस चेंज होती रहती है. It's not a perfect circular orbit. It's changing, but the average distance is 1 astronomical unit, and 1 astronomical unit is how much? 1.496 into 10 raised to power 11 meter. In NCERT, the back questions uses these values. That's why I'm just giving it. Otherwise, it's not of much importance for the community level. NCERT, the questions uses these values and all. Third one is parsec. Parsec सुना है किसी ने? Maybe in school you might have done. The parsec is quite a large distance, and it is used for, it is the largest unit you can say for the measurement of length. It is used for basically the distance between two galaxies, two stars or something. So one parsec kya hai? Let's try to define it. If suppose two stars we observe in the space, and distance between the two stars is 1 astronomical unit. This distance is distance between two star S1 and S2. This definition is also there in one of the NCERT question. If there are two stars which are at a distance of 1 astronomical unit, the distance at which they make an angle of 1 arc second. The distance from these arc is 1 parsec, and at that distance it forms an angle of 1 second. So parsec will be defined as what? This is the distance at which two star or two object at a distance of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 arc second. Right? इन दोनों स्टार के बीच में डिस्टेंस है 1 astronomical unit. The distance at which they subtend 1 arc second angle. So the distance at which two stars, 1 astronomical unit apart, subtends an angle of 1 arc second. Subtends an angle of 1 arc second. Right? 1 arc second is, so by using theta is equal to S by R is equal to S divided by theta. This was the definition of plane angle. Here the angle is 1, distance कितनी है? 1 astronomical unit, and angle is 1 arc second. And we know these two values, we convert this into the standard unit. 1 arc second, 1 astronomical unit is 1.4. ये actually ना information है, there's not physics, but yes, it is involved in the NCERT questions.
That's why I'm taking, जैसे हमने last class में भी कुछ standard से definitions लिखे थे, standard dimensions के. Similarly, 1 arc second को हम change कर लें in the radian. 1/60 1/60 into pi by 180. This is in radian. Radian is unitless. On solving this, this comes out 3.08 into 10 raised to power 16 meter. Right? समझ में आ गया ना? What is 1 parsec? This distance Yes, sir. r is 1 parsec, s is 1 astronomical unit, theta is 1 arc second. So 1 parsec is 3.08 into 10 raised to power 16 meters. In terms of light year, this can be written as 3.26 light years. Saksham Bansal. Just give me a second. Okay. Right. So 1 parsec is 3.26 light year. Now, these are the standard relations. So 1 parsec is the largest unit. ये कुछ large distances के लिए, and for small distances के लिए we have correct. Similarly, there are there are some units for measurement of mass, some common, but I think that is commonly used, ton, quintal, and something. So that you can read it from the book. That's not required for us to do here. आगे बढ़ते हैं. Second part is like these are the some of the units that you might not have seen. Next part is measurement of length. There are some methods for measuring length. Measurement of these fundamental quantities, we will see few of them. What are the methods by which we can measure the distance between the sun and earth? By which method we can find out the height of Mount Everest or something like. So measurement of length by using some of the technique. One of them is for very small length measurement, we require some new instrument like Vernier calipers and screw gauge. That also we will be doing in this chapter only, in the measurement part. अभी हम बात कर रहे हैं not exactly measurement, estimation of the length of the large distance. Estimation of large distance. Estimation इसलिए because it is not exact or may not be exact precise. बट हम उन लार्ज डिस्टेंसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ दैट. सो जैसे वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड. एक तो आपने कुछ हाइट एंड डिस्टेंस मेथड किया होगा, दैट वाज इन मैथ्स मे बी. जैसे किसी बिल्डिंग की हाइट लगानी है, फाइंड आउट करनी है, और समथिंग लाइक सपोज this is a mountain, you have to find the height, और किसी ब्रिज की हाइट मेजर करनी है. Then what we do, there is a small apparatus, उसके में एक छोटी सी पिन लगा के, and then we try to see the tip of that building or mountain so that it is completely covered. So whatever it is, mountain, building, anything, यहाँ पर इसकी height है suppose capital H, distance is capital D. We have to find this height. हमने उस बिल्डिंग से या उस माउंटेन से कितने डिस्टेंस पे ये सेटअप लगाया, दैट we know the height of this pin, and we know the distance of this pin from the eye position. Are you able to understand किसकी बात हो रही है? जो आपने देखा होगा कभी कभी सड़क के किनारे कुछ येलो कलर का ट्राइपॉड से स्टैंड लगा के मेजरमेंट लेते रहते हैं.
So that is basically a similar type of measurement. To measure certain height of a bridge, building, mountain, tree, anything, we use certain approach. There is a small pin, and through that pin, the building is completely overlapped, so that when you see, you'll be able to see only this pin. So by using the similar triangle, or you can say by using this tan theta measurement, as small h we know, the height of pin we know, distance from I we know, capital H we have to find, and capital D obviously we know the distance at which it was kept. So by using the similar triangle method, or by using the angle of elevation, measuring the angle of elevation, we can find out the distance. Fine. So this is one method which is using the geometry or using the trigonometry, whatever you can say. The second method is this is by measuring the angle of elevation. So by using the angle of elevation, we can find out. Second is by using this overlap method. Now, when we have to find the distance of any distant planet, or by measuring the any distant star, then we have another method. We use it. We call it parallax method. Saksham, have you joined? Saksham Bansal? Saksham? Yes, sir. Saksham Bansal. अच्छा, कोई बात नहीं. Probably he has not joined, busy somewhere. Fine. So parallax method, the second is estimation of large distance using parallax method. अब parallax actual में क्या होता है? What anybody knows what is parallax? Experiment में हम use करते हैं parallax error remove करनी होती है हमें. So when you see, yes. सर जब कभी भी हमारा हम स्केल से देख रहे होते हैं या फिर हम कोई भी मेजर कर रहे होते हैं तो हमारा आंखों के एंगल की वजह से कभी कभार हमारी मेजरमेंट्स डिफरेंट आ जाती हैं. Right, that's parallax error. Absolutely, that's parallax error. Parallax क्या होता है? Parallax is when we close our left eye, see the world from right eye. अभी करके देखो. And if you close your right and see the left, I mean, if you do it faster, close left, then right, close left, then right, then there is a small change of position. Right? If you see anything, any object in front of you, close the left eye, see from right eye, and then quickly change the position of your eye. Then we get what? There is a small shift in the position. Anything you can see. That shift is called parallax. Actually, that is the meaning of parallax. When we shift our eyes, then there is a sideways displacement, and that's called parallax. But parallax angle क्या होता है? Suppose any object we see like this is an object of length. इसको हम किसी point से देखते हैं. The ends of that object, it will make an angle. So the angle subtended by that object is called parallax angle, right? So the angle that it makes at the object, that's called parallax angle. That's why when we have to measure the parallax angle, we have to close one eye, like if you are shooting or something. So for shooting, you need to close your right eye, like if you are
Parallax method में, like suppose this object of length L maybe, and it is forming an angle here. So we can measure theta is the parallax angle, and this theta can be measured, and by measuring this theta angle हम इसकी distance measure कर सकते हैं. We can find out this distance. So say again it will be the same formula. Angle is arc length upon radius. Parallax angle we will convert into radian, and then accordingly we can find out. So for example, suppose radius of moon, the distance of star, anything we have to find. तो हम अर्थ के डायमेट्रिक एंड से उस पर्टिकुलर स्टार का पैरेलक्स एंगल मेजर करते हैं. So measuring the distance of a distant planet or distant star, this is Earth. From the Earth measurement of this is measuring the distance of distant star, maybe distance of distant star. Or maybe any other planet. So Earth के respect में तो distant star बहुत छोटा सा ही होगा. We will join the ends of the Earth's diameter and find the parallax angle formed by it. If we join the diametric ends of the Earth, this angle is called parallax angle. So capital D is the diameter of Earth, and that we know, which is already estimated. This angle theta we will be measuring. तो हम ये R को calculate कर सकते हैं. This is the unknown star or maybe sun or moon, whatever. तो जिसको भी हमें मेजर करना होता है उसको हम अर्थ के डायमेट्रिक एंड से उसका एंगल मेजर करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सैटेलाइट एंड समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम द पोलर सैटेलाइट्स. एक ऊपर नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ, समथिंग लाइक दैट यू कैन से. एंड फ्रॉम दैट वी मेजर दिस एंगल, एंड फ्रॉम दिस measurement of the angle, once we have this angle, we have the diameter, of course we have the diameter, we can find out the distance. Right, so मतलब ये obviously now it cannot be considered as the exact length, it cannot be considered as exact length, but yes, it gives a fair estimation of the distance, क्योंकि पहले तो हम anyways calculate कर ही नहीं पा रहे. Right? Okay, so I'm taking the example from NCERT because school also gives some questions from NCERT. So again here theta is the parallax angle. Theta is parallax angle which is measured by some laser method or something. वो अभी अपने मतलब का नहीं है. And this angle has to be always converted in radian. Capital D is the diameter of Earth, which is known. वो question में given होगा. You don't have to measure it. This is already known. And R is the distance of that planet or a star, distance of a star from Earth. Theta is equal to D by R. Parallax angle is D by R. Diameter of Earth divided by distance of that diameter of Earth divided by the distance of a star. और यहाँ से फिर हम R को D upon theta में convert कर लेंगे. Theta should be converted in radian. So for example, I'm taking few questions from the calculation के लिए calculator use मत करना. And because में केवल calculation ही difficult part है, बाकी formula बहुत simple सा है. Question is like the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. This is an NCERT example. सर वो आपने डी लिखा हुआ कोई सिंबल है सर वो? बेटा वो D लिखा है. D is the diameter of earth. Yes. So question is that moon is observed from the earth two opposite diametrically opposite end. तो वो diameter बन गया. Moon is observed from two diametrically opposite end.
A and B on the Earth. Angle subtended at the moon is found to be 1 degree and 54 minutes. The angle subtended at the moon is found to be 1 degree and 54 minutes. Now find the distance of that, find the distance of moon given that the diameter is क्या है सर एंगल 1 डिग्री 54 minutes. Calculate the given the diameter of Earth is 1.276 into 10 raised to power 7 meter. Find the distance of moon from the Earth. Capital D is given, diameter is given, theta हमें निकालना पड़ेगा रेडियन में convert करके. The parallax angle of moon, so from the diametric opposite point of Earth, moon बहुत दूर है, so एक point object जैसा दिखेगा, point मतलब very small. The diameter is 1.2676. This D is known. R we have to find out. Theta is given. Parallax angle of moon from the Earth. Parallax angle of moon will be 1 degree into 54 minutes. कैसे करें इसको? We have to convert this into either seconds or so 1 degree and 54 minutes. 1 degree is 60 minutes. So total हो गया ये 60 plus 54 144 114 minute. इस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते थे. 1 minute is 1/60 degree, and then to convert degree into radian into pi/180. This comes in radian. This is the angle, parallax angle of moon from Earth. Solve करके जो भी आएगा, we can put that value. It is I think 3.32 into 10 raised to power -2. आप बाद में अपने आप कैलकुलेट कर लेना. Don't use calculator. Theta is 3.32 into 10 raised to power -2 और हमें capital D पता है, so we can find out the distance of moon. Correct? Theta is equal to S by R. तो यहाँ पर S जगह पे आ गया diameter. R is equal to D upon theta. Distance of moon. Capital D is given as 1.276 into 10 raised to power 7, and theta is 3.32 into 10 to the power -2. On solving this, comes out 3.84. ये NCERT example है, so I have the values. आप इसको आराम से बाद में calculate करके निकाल सकते हो. Distance of moon from Earth. Calculation के लिए don't waste time for now. Only the method. Theta is D by R, so R is 3/2. ऐसे बहुत सारे 4-5 questions हैं in the NCERT. Some an example and some. If you want to solve the question from SL Arora, then this is on page number 2.13. The related exercise. SL Arora, the homework exercise, page number 2.13. Right? Okay. कुछ ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस भी होंगे जो आपने क्लास 9-10 में पढ़े थे. If suppose some laser beam or some signal is sent towards moon और moon से वो कुछ 7 मिनट में वापस आ गया, it come back after 8 minutes or something. Find distance is given, so calculate the speed of the laser beam is given, then find the distance. तो वो simple है, distance का double उसने travel किया and divided by time will be velocity, so that we can use. So in this I mean there are some questions like that.
जिससे हम डिस्टेंस या डेप्थ ऑफ ओशन मेजर करते हैं. एंड द न्यू थिंग वाज पैरालैक्स. पैरालैक्स मेथड से हम किसी भी हेवनली बॉडी, किसी भी डिस्टेंट स्टार और प्लैनेट और मून, उसकी हम क्या कैलकुलेट करते हैं? we find its distance, and we actually don't find, this is the estimation, that's why it is not the exact measurement. Understood parallax method? Yes, sir. Right. Next is, similarly, if we have to measure the very small length, for example the size of molecule or something. Just a second. Yes. So this is the distance of moon from the earth. Similarly, अब हम opposite देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी distances हो गई. Now let's calculate or estimation of very small distances. जो normal length होगी उनको तो हम किसी instrument से, proper instrument से measure कर सकते हैं, but very large or very small, estimation of very small distances. Estimation of very small distances that we can. Very large के लिए one of the method is that height and distance method using the angle of elevation. Second is parallax method. बहुत छोटी अगर कोई values है, for example estimation of size of molecule, size of molecule of some oil or acid, size of molecule of some oil drop or something. ये मेथड बनने के लिए वर्क करेगा जो किसी लिक्विड फॉर्म में या किसी सॉलिड फॉर्म में है. So this method is that you use that drop on maybe on a liquid solution, liquid surface, and let it expand as much as possible. और other way around आप ऐसे समझ सकते हो, suppose हमने कोई drop ली है, and this drop, this is suppose some oil drop of radius capital R, radius capital R. मैं थोड़ा simplify कर रहा हूँ इसको. Radius of this oil drop is capital R. अब हमें नहीं पता इसमें कितने molecules हैं, क्या हैं. So this radius won't be the size of the molecule. But जब इसको हम किसी surface पे डाल के और spread करते हैं, अभी ये ऊपर 3D में था, अभी ये surface पे नीचे आ गया, and now this gets spread maybe on a circular film. For understanding के लिए हम इसको suppose किसी rectangular shape में इसको spread कर लेते हैं. You can understand this like jam spread on the bread. तो ब्रेड के ऊपर हम जैम को स्प्रेड करते हैं, बटर को स्प्रेड करते हैं. सिमिलरली this is spread as maximum as much as possible. Area of this film or the surface, this is suppose capital A. अब हमने जितनी minimum thickness की maximum distance तक इसको हमने spread कर लिया. So now it has a very 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 thin layer, minimum possible layer. जो भी minimum possible layer हो सकती है, that we have already formed. So now since this layer is so small that it can contain only and only one molecule layer. Thickness of this film is T. You understood the method? हमने एक छोटा सा कोई भी oil का drop लिया, उसको या तो water के surface पे या किसी भी surface पे डाल के, then we are spreading it to the maximum possible value, maximum possible area. Now when this area is maximized, इसके corresponding जो thickness होगी, that thickness will be minimum possible thickness, and minimum possible thickness means it becomes the almost only one molecule. So now what we are also assuming here, that in this small length there is only one molecule, because this is the minimum possible thickness. So ये जो T है, that T can be used to calculate the order of size of molecule.
फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम इनिशियली था, the same volume should be of that layer because mass remains conserved, volume remain conserved क्योंकि density तो same ही है. By volume conservation, जितना इस एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम था, the same must be the volume of this film, this rectangular film. So 4 pi by 3 capital R cube. आपसे क्वेश्चन में इसमें स्मॉल n भी लिखा होगा, दैट 10 ड्रॉप्स, क्योंकि एक ड्रॉप में तो बहुत कम अमाउंट होगा, स्प्रेड करना थोड़ा मुश्किल. 4 pi by 3 r cube, then it will be volume is area into height, so a into capital A into t. From there we can find out this t is equal to v by a. v जितना भी हो, एक अगर ड्रॉप है तो 4 pi by 3 r cube, there are n number of drops, then we will multiply by n also. बेटा समझ आ रहा है? तो इसको सिंपल से हम ऐसा बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट फिल्म जो भी थी, वॉल्यूम ऑफ फिल्म जो पहले और बाद में दोनों में सेम है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म. दिस एस्टिमेशन इज used to find the size of order of molecule, assuming that the film is of only one molecular thickness. Exact measurement तो फिर भी नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें there is a small error, but obviously we cannot measure by using any instrument the thickness or the size or the diameter of molecule. So that is the only method. अब ये तो लेंथ हो गया, लेंथ को तो हम मेजर करते हैं. मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी फाइंड द मास? तो एक तो इनर्शियल मास होता है, एक ग्रेविटेशनल मास होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं. और दूसरा हम कुछ ग्रेविटेशनल मास को फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं. I mean, there is no maths involved, that is only. ये तो हो गया जो हमारे पास मास है नॉर्मली दैट इज अवेलेबल टू अस. सपोज अगर हमें मास पता करना है जुपिटर का या किसी स्टार का, हाउ डू वी मेजर दैट? मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज स्टार, or maybe measurement of using measurement of some unknown star, नया कोई मिला तो हम कैसे उसका मास कैसे पता करते हैं? उसके लिए there is a mass spectrograph. मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है? इट डिटरमाइंस कि उस बॉडी से, उस अननोन एनवायरनमेंट से कौन कौन से रेडिएशंस निकल रहे हैं, कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स हैं. स्पेक्ट्रम से एक रफ आइडिया मिल जाता है दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट. तो ये मेजरमेंट हो गया लेंथ का. नेक्स्ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास. जो छोटे मोटे मास होंगे उसको तो हम फिजिकल बैलेंस में रख के दोनों तरफ लॉ ऑफ मोमेंट यूज करके, we can principle of moment यूज करके we can find out. Now I'm talking about how we find the size of moon, moon, mass of star, or any other such heavy unknown environment quantity. हम उस एटमॉस्फेयर से आने वाले रेडिएशन को मेजर करके पता करते हैं उसके अंदर कौन कौन से मेन एलिमेंट है यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर. स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है उस मटेरियल से, उस एनवायरनमेंट से आने वाले स्पेक्ट्रम को स्टडी करके एक कंपोजिशन बताना, एवरेज कंपोजिशन, एवरेज डेंसिटी. यूजिंग दैट एवरेज डेंसिटी वी कैन साइज एस्टिमेट कर लेते हैं बाय पैरेलैक्स मेथड और सो, एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई दैट डेंसिटी विद वॉल्यूम. बेटा समझ आ रहा है ना कुछ? ये कुछ बहुत बकवास तो नहीं लग रही? I mean, this is बकवास, रैंडम सी चीजें हैं, but yeah, that's the only method. That's the only method available for finding the mass of Jupiter or mass of any other new star. How do we measure time? टाइम के लिए कुछ एटॉमिक क्लॉक्स यूज करते हैं. जैसे सारे कंप्यूटर्स में, माइक्रो प्रोसेसर में एक चिप लगी होती है दैट हैज इट्स ओन क्लॉक. दैट इज कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डीक्साइट होते रहते हैं दो लेवल के बीच में. So measurement of mass and measurement of length is not done by some any extra mathematical method. That is done with the help of some experiments. Radioactive dating, carbon dating, आपने शायद सुना हो.
Those are the method which is used for the estimation of time or measurement of time. Length में केवल एक नया सा कुछ method था, and that was the formula for okay. So that was the estimation by using parallax method and by using right. So there are a few questions in the SL Arora. I am just writing the page number for you. You have the PDF. You have the PDF, so you can use that PDF to solve question right now. If you one or two question, just page number 2.17. Question number 1. Neutron star has a density equal to that of nuclear matter. In neutron star की density है 2.8 into 10 to the power 17 kg per meter cube, and if the radius is estimated as 15 kilometer, this is the density. If the radius is estimated as 15 kilometer, calculate the mass. Just give me a minute. Calculate the mass. Simple है, density and radius is known. Estimate the mass of neutron star. Right, so from the radius we can calculate volume, from the volume we can calculate mass. So ये सब simple formula है, but okay. So one more strange statistics is that अगर हम mass और length और time इनकी range देखें, range का मतलब कि minimum और maximum. So usually mass, length and time, we understand that there should not be any correlation, but the order of magnitude of length, order of magnitude of mass, order का मतलब minimum से लेके maximum के बीच में जो ratio है, order of magnitude of length, the minimum is of the nucleus size, minimum order is 10 to the power minus 15 meter, to the maximum ranges. Maximum क्या होगा? Wait, what is the maximum size possible for length? Maximum length किसकी होगी? I mean, what should have the maximum possible length? Parsec. सिर्फ के पार्सेक की होगी. नहीं, वो तो यूनिट थी maximum. I'm asking the maximum possible length किसकी हो सकती है? वो तो maximum unit है. Maximum unit means largest unit that we use. I'm asking, ये तो सबसे छोटी चीज होती है न्यूक्लियस हमारे लिए अभी प्रोटॉन. This is basically size of one proton. न्यूक्लियस का मतलब उसको ऐसा बोल सकते हो, this is the size of proton. Now I am talking about कि maximum size किसका है. सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे यूनिवर्स? Light year. नहीं बेटा, लाइट ईयर तो छोटा होता है पार्सेक से. मैं यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस चीज का साइज सबसे बड़ा होगा. बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स, डिस्टेंस बिटवीन साइज ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड को अगर हम ज्वाइन कर दें, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग इन साइज बाय द वे, बट किसी भी टाइम पर अभी जो उसका ऑर्डर है वो 10 to the power 26 है. ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है.
मिनिमम साइज ऑफ प्रोटॉन, बीच में हम कहीं आते हैं साइज ऑफ अर्थ, साइज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लूटो, ये रेंज है। मिनिमम पॉसिबल रेंज इज लेंथ इज 10 to the power -15, जो कि प्रोटॉन या न्यूक्लियस का साइज बोल सकते हैं। एंड मैक्सिमम इज द बाउंड्री ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। सबसे लाइट किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज दी 10 to the power -30 ऑर्डर। ये ऑर्डर की बात है इसलिए हम 9 नहीं लिखा है, 9 को हमने ऑर्डर में 10 इंक्लूड कर लिया। 10 to the power -30 kg, दैट इज इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम मास किसका हो सकता है? अगेन यूनिवर्स में सब कुछ मिला लो। द मैक्सिमम मास इज ऑफ दिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, mass of 10 to the power 55 kg, mass of observable universe. Then order of time. Now if we check the order of time also, order of magnitude of time interval. So these three things in the fundamental quantity also we said that there should not be any relation. Order of magnitude of time. सबसे smallest time किसका होता है? न्यूक्लियस के अंदर के अनस्टेबल पार्टिकल, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -24 सेकेंड। 10 to the power -24 सेकेंड इज लाइफ स्पैन ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। करेक्ट। मैक्सिमम साइज किसका होगा? मैक्सिमम टाइम किसका है? एज ऑफ यूनिवर्स, दैट इज 10 to the power 17 सेकेंड, दैट्स इट। एज ऑफ यूनिवर्स। कोई रिलेशन दिख रहा है इनमें? Any common relation between them? It was observed that if we find the ratio of maximum to minimum, the ratio of maximum length to minimum length, the ratio of maximum size to minimum size, mass, they all have a common factor, 10 to the power like 41. They have some common factor. The ratio is 10 to the power 41 for length and for time, and for I think I mistaken it. This is 10 to the power 84, so it is 54. Just let me confirm it. 10 to the power 52 or something. So when you take the ratio, that ratio is 10 to the power 41 maximum to minimum, 10 to the power 41, 10 to the power 82, which is square of 10 to the power 41, 10 to the power 41. So I mean they are not entirely different. There should be some relation, and on that basis also the new theories are trying to relate mass, length, and time. Space and time is also now kind of connected by using string theory and theory of everything. Right. So okay, this was not of any useful information, but this is something which is also one proof kind of thing that mass, length, and time that we use as entirely independent fundamental quantity, they also have some kind of relation. They are not exactly entirely different from each other. Right. अब आते हैं हम next part is for the measurement. जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, when we do a measurement का मतलब we are actually trying to do some experiment में कुछ quantities हैं, there are certain things जिनकी हमें values लिखनी है, उसको लिखने के लिए या उसको अरे calculate, पैटर्न वाली बात सर हमें नोट डाउन करनी है। नहीं ठीक है, वो कोई मतलब नहीं था, मतलब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि that even sir. from the classical information we also get some correlation between the mass, length and time. तो इसीलिए अभी जो नई थ्योरीज हैं जिनमें ये सारी कहानी होती है, that theory of everything exists in the form of mass, everything exists in the form of
Everything exists in the form of string. Now it's not mass, it's not time. Even thoughts exist in the form of wave and something like that. So there is some relation. अब आते हैं measurement. Measurement का मतलब होता है comparison with some standard. किसी भी quantity को उसके standard से compare करना. Like suppose if you have 1 meter scale, you have to measure the length of your table. You just take that 1 meter length and you'll compare how many times it is repeated. Right? To measure the length of some table maybe. So what basically we have to do is that we have to compare this length with its standard. So 1 meter जो भी है हमारे पास, we will be using that and we will be seeing that how many times it is getting repeated. If it is repeated 5 times, then 5 meters is length. So to measure, we require first thing certain instrument. Like in this case, it is meter scale, and we require a unit. Like if it is a meter, it might be having centimeter or meter or something. So the comparison of any body with the comparison of a body with its reference is defined as is called as measurement. Because there are many things involved, many thing involved means like एक तो मेजर करने वाला इन्वॉल्व है, दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, तीसरा उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितनी प्रिसाइज मार्किंग है. All those three things have certain role to play in giving the accurate value or accurate measurement. अब कितनी भी हम कोशिश कर लें, how so close, how so sophisticatedly we measure it, there might be some error. थोड़ा जहां से स्टार्ट करना था उसके साइड से हो गया, that is zero error. इंस्ट्रूमेंट थोड़ा फॉल्टी था, स्केल वाज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं पे टेढ़ी कहीं पे सीधी, something like that. So there might be any unknown reason that your measurement will not be perfect the very first time. जब भी हम कोई measurement करते हैं, any measurement we do, then we have two terms that we have to take care of. Our measurement should be accurate and it should be precise also. Accuracy and precision. These two things we want. These two things we want for any measurement. अब दोनों में difference क्या है? Are they different or the same thing? Accuracy and when measurement is accurate, your measurement is precise. I mean, generally speaking, it seems that they both are same thing. पर वैसे डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है? सर एक्यूरेट कोई चीज तब होती है, मतलब अगर हमारे पास कोई एक चीज सपोजिटली, एक मेरे पास इरेजर है, उसका मेजर मैंने 3.213 व्हाटएवर ऐसे ले लिया, वो मेरा प्रिसाइज हो जाएगा. Okay. How बट do you उसकी know? एक्चुअल लेंथ वाज मोर नियर टू समथिंग लाइक 3.132 Okay. समथिंग लाइक दैट. तो अगर मैंने उधर सिर्फ 3.1 लिखा तो वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा. So basically, if we know a certain value, और हम उसके ज़्यादा close हैं, which means if error is less, then it is more accurate. So it means accuracy का मतलब क्या होता है? It is the closeness to the actual value or accurate measurement. Closeness to the actual value. Right? और true value. अब actual value और true value तो नहीं पता है, मेरी तो problem यही है. अगर एक्चुअल वैल्यू पता ही होती तो हम मेजर क्यों कर रहे होते? कॉमन सेंस, राइट? अभी आते हैं इस पॉइंट पे भी आते हैं. प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर लिया, बट देयर इज नो गारंटी इट इज गोइंग टू बी एक्यूरेट. सो इट मींस दैट limit is limit of resolution, or the more number of decimal places are there, right? So it defines, it is the resolution of your measurement. Resolution का मतलब होता है more number of decimal places. If there are more number of decimal places, which means your measurement is more precise, but it may not be accurate. More number, it is the resolution of the measurement. Correct? So as she told, किसने बोला था बेटा ये example?
So Shreya. Yeah, very nice. Good. Shreya. So like if suppose some value is known as 2.35 meter, one person has given this reading as 2.34, another person has taken this reading as 2.3712. Now this 2.371 भी ले लो, 2.371 meter. This reading is more accurate because इसमें ज़्यादा precise value इसलिए है क्योंकि ज़्यादा number of decimal values है, decimal numbers हैं, more decimal places, and this is close to the actual value, so this is more accurate. जब भी हम कोई measurement करते हैं, we want to acquire both. It should have both accuracy as well as precision. Precision is more number of decimal places, even the smallest measurement we have done. Accuracy का मतलब होता है कि we have measured the value close. So accuracy ज़्यादा है मतलब error कम है, precision So- ज़्यादा है. Yes. तो x2 more precise होएगा. Yes, मुझे X2 is more precise. X1 is more accurate. जब भी हम कोई measurement करते हैं तो हमें उसमें दोनों चीजें चाहिए. It has to be accurate as well as precise. जितनी maximum precision है. अब अगर हम in general अगर बात करें तो precision कौन decide करेगा? Who will decide the precision? I mean, on what factor it will Number of depend? decimal places. The instrument used, right? आपके इंस्ट्रूमेंट में दो डेसिमल प्लेस ही नहीं है मेजर करने के लिए, then how can you give the two decimal place? Error depend, accuracy will depend upon even who is measuring, वो पैरेलैक्स कर रहा है कि नहीं, वो कैजुअली अप्रोच से मेजर कर रहा है or something like. So we need to choose a instrument according to what we are supposed to measure. Suppose we have to measure the thickness of maybe your hair strand, और हम लेके आ गए नॉर्मल स्केल. नॉर्मल स्केल में जो सबसे छोटी लेंथ होती है that is 1 millimeter, and that 1 millimeter is not possible to use for the measurement of the length of the thickness of your hair strand. ठीक है. So किसी ना किसी reason से sometimes maybe the person is making error, sometimes the instrument is not up to the mark, sometimes the instrument precision or instrument least count or resolution is also becoming insufficient. हमें और छोटी marking चाहिए on the scale to measure that value. So in every measurement there is bound to have some error. Error in measurement कहाँ से आती है? Error का मतलब the difference between true value, actual value and measured value. अब इसमें एक चीज जो बार बार थोड़ी सी odd सी लग रही है कि हम बोल रहे हैं difference between measured value and true value. अगर हमारे पास true value है by any chance, then why we will be doing measurement? Common sense. The difference between measured value and, you understood my point? Measured value and actual value. अब actual value या true value जो भी है वो कैसे पता पड़ेगी हमें? Actual value तो किसी के ऊपर लिख के आती नहीं. Suppose कोई टेबल बनाई किसी कारपेंटर ने, so he doesn't print that actual value or something, या वो उसने भी measure करके लिखा होगा, अपने आप तो लिख के नहीं आएगी. So that means difference between measured value and actual value is defined as absolute error. इसको हम बोलते हैं absolute error. अगर suppose कोई quantity है x और उसको हमने measure किया है x dash. If x is the actual value, x is actual value and x dash is the measured value, then error in x, delta x is x dash minus x. Is called absolute. Or absolute का मतलब we always have to put it with the positive. This is the absolute error in x. So error को हम represent करने के लिए we have three different ways to represent the error. Absolute error, second is relative or fractional error, error divided by the initial or actual length,
Relative error is error divided by the actual value. This is delta x by x. And third is called absolute error, is difference between true value and अगर बहुत सारे मेजरमेंट हैं तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, उन सारी एरर्स का अरिथमेटिक mean or absolute error will always be the relative error is the ratio of mean error to true value. So वो diagram और graph उनकी formula से clear है. This is the ratio of absolute error to actual value. That is defined as the relative error. Sorry, actual value. Correct. And third one is percentage error. Percentage error is error divided by actual value multiplied by 100. This will be the percentage error, right? So relative error को these three are the different methods of representing the error, but we always prefer in terms of percentage ताकि जो भी measurement है उसके ratio में हम error calculate कर लें. So ये तो हो गया mathematical representation. There will be these three ways of representing the error. Now what are the type of error and why there is error? So basically, if you broadly categorize the error, there are two type of error. One is called systematic error, another is called random error. Systematic error and random error, these are the two types of error. सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि जो एरर हमने नहीं की वो ऑलरेडी सिस्टम में है, हमारी गलती नहीं है. द पर्सन हु इज डूइंग दैट मेजरमेंट, he is not doing the fault. It is because of some specific reason, and उस reason की वजह से हमेशा same ही error आएगी. Same error का मतलब if it is less than the actual value, it will always be less than actual. If it is greater than actual value, then it will always be greater than actual value. Understood? Right. बेटा ये समझ आ रहा है ना लास्ट पॉइंट? सर सिस्टमैटिक एरर को समझ गया. सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है ऐसी एरर जो हमेशा होगी, आप कुछ भी कर लो, you cannot. So example देता हूँ. Suppose I am right now sitting in the room where AC is on, and someone asks me to give me the today's temperature. हम रूम के अंदर बैठ के थर्मामीटर लगा के, लैब थर्मामीटर, and we are measuring the temperature. Correct? Yes sir. So ऐसे मेजरमेंट में हमेशा आपका जो टेम्परेचर आएगा वो एक्चुअल से कम ही आएगा. This is called right. So systematic errors, if you want to write a definition, the errors which always occur in the same direction. Same direction means either it will be always positive or it will be always negative. The errors which always occur in the same direction. Right? Are called systematic. एग्जाम्पल दिया मैंने, हम एसी ऑन करके रूम का टेम्परेचर निकाल रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग मेथड. Always temperature will be less. So some of the reason will be some wrong approach, imperfection. So what are the possible reasons? Like first, it might be experimental error. It will be instrumental error. Instrumental का error मतलब जहां से आपको measure करना है, जहां पे zero होना चाहिए वहां पे zero ही नहीं है. Like one of the error is called zero error.
zero error is also one of the इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है या तो उसका जीरो गड़बड़ है या उसकी स्केलिंग सही नहीं है, स्केलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, इंस्ट्रूमेंट में मार्किंग यूनिफॉर्म नहीं है, something like that. Those example are of systematic error. Every time you will be measuring less than the actual. सपोज आप स्केल जिसको मेजर कर रहे हो उसका जीरो जहाँ पे होना चाहिए वो स्केल वहां से टूट गई है, so that zero is missing, something like, but you are still assuming कि हाँ जीरो यहीं से है, and now if you do the measurement always the length measured will be less than the actual, something like that. This is one vague example of zero error. दूसरा imperfection, imperfect method, I mean wrong experimental method. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हम AC ऑन करके wrong experimental technique मेजर कर रहे थे रूम टेम्परेचर और हम AC रूम के अंदर बैठ के मेजर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. पर्सनल एरर, पर्सनल एरर मतलब दोज कैजुअल एरर, हम लेटे हुए हैं और लेटर लेटर रीडिंग ले रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग परपेंडिकुलरली टू सी द रीडिंग, रीडिंग में कैजुअली एक साइड से टिल्ट हो गया, हम हर बार रीडिंग ले रहे हैं, तो दैट रीडिंग विल ऑलवेज बी लेस देन द एक्चुअल, राइट. इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं दैट सडनली आप मेजरमेंट कर रहे थे, सडनली देयर इज समथिंग हैपेंड, हवा चल गई या विंड आ गई, मे बी suddenly there is a wind blow, temperature suddenly drop हो गया, something. So there are some external conditions, some external causes which is beyond your control and you cannot also guess that कि ऐसा कुछ होने वाला है, कोई आपका फ्रेंड है उसने हाथ हिला दिया, something like that. So ऐसे किसी भी रीजन को हम सिस्टमैटिक एरर ही बोलेंगे, that is not random error, क्योंकि वो हमेशा अगर every time he give you a push you will be having the same type of error, same type of measurement. सेकेंड जो होता है दैट इज कॉल्ड, सो सिस्टमैटिक एरर की बेसिकली पॉइंट क्या है, हम चाहे 100 मेजरमेंट करें, 1 मेजरमेंट करें या 1000 टाइम्स करें, एवरी टाइम द एरर विल बी ऑन द सेम साइड. अगर हम इसको 100 टाइम्स करके एवरेज ले लें या 5 टाइम्स करके एवरेज ले लें, एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड. Systematic errors cannot be minimized just by increasing the number of observation and taking the average of that. लेकिन जो रैंडम एरर होती है, रैंडम एरर का मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं की, एवरीथिंग डन प्रिसाइजली, देन अब ये एरर किस लिए होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट का मतलब सपोज हम इस स्केल की लेंथ मेजर कर रहे थे, वी पुट अ नॉर्मल लीनियर मीटर स्केल. अब यहाँ पर हम कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के तो देखते नहीं है, समटाइम्स इट विल बी एग्जैक्टली in front of zero, sometimes it will be towards left or towards right of actual zero. तो वो कभी थोड़ा सा ज्यादा कभी थोड़ा सा आगे, ऐसा कुछ हो सकता है. एंड सिमिलरली यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट पे क्या हो सकता है, एट द लास्ट जहाँ पर ये एंड हो रहा है, that this length is not coming exactly, this is in between the two different readings, this length is coming between suppose second and third. तो अब ये हम ना तो इसको सेकंड काउंट कर सकते हैं ना इसको थर्ड काउंट कर सकते हैं, we will be either sometimes ये 2 के आसपास होगा, then we will consider it to be the second division, sometimes it will be towards closer to the third one, so we'll consider it to be the third division, like 4.2 or 4.3. This measurement is done very accurately with all right experimental technique, right instrument, but still कभी जीरो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे हो सकता है. Similarly this reading, the last reading is also taken, that might be slightly more or slightly less than the actual value. तो इसको हम बोलते हैं least count error. Least count error का मतलब है this error is something which is not because of us, it is because of the least count. Least count का मतलब ये जो छोटी सी जो the smallest measurement जो भी हम किसी instrument से कर सकते हैं without any error, that's called least count. इसका लीस्ट काउंट थोड़ा बड़ा है, हमें और छोटे लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इससे भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, देन मे बी एरर विल बी मिनिमाइज्ड. बट अगर उसमें भी 2 के बीच में आ गया तो उससे भी छोटा, फिर उसमें आ गया तो उससे भी छोटा. सो एवरी टाइम हम और बेटर प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं. सो द रैंडम एरर इज irregular and it is sometimes positive and sometimes negative, इसीलिए इसको हम रैंडम एरर बोलते हैं. The errors which occur in both the direction, the errors which occur in both the direction, sometimes positive, sometimes negative,
are called random error. अब इसके लिए एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? Do as many measurement as possible. अगर हमने 10 measurement किए, हो सकता है 6 times right, 4 times left, positive and negative. So when you take the average, वो average balance out हो जाता है and the error in that is minimized. So हमेशा हम arithmetic mean लेते हैं. To minimize random error, we take arithmetic mean of large number of observation. But systematic error cannot be minimized by using this method. To minimize the random error, arithmetic mean of large number of observation is used. To minimize the random error, large number of readings are taken. But अभी एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो भी अनआंसर्ड है. हम एरर कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं. अब ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो हम एरर कैसे निकाल रहे हैं? इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे एरर हो सकते हैं. दैट इज लाइक due to carelessness of the person, so some personal error, and that personal error is something, some blunder, like हमने गलत instrument ही choose कर लिया, so that there is no option of reducing those error. Instrumental error is not using the wrong instrument. Using instrumental error is that you use the correct instrument, but still either because of zero not in the place, or because of the scale not being uniform, for some reason there was a error, but it always be there. मेरा क्वेश्चन अभी एक आंसर रह गया. हाउ डू वी नो द ट्रू वैल्यू? देयर इज नो मेथड इन व्हिच वी, आई मीन, अपने आप तो किसी भी चीज की मेजरमेंट आएगी नहीं हमारे पास. तो हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या लेते हैं? वी टेक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग 10 20 और उसका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं. So true value or actual value is always taken as arithmetic mean of large number of random observation. True value or actual value of any measurement. The mean or arithmetic mean, to be more precise, the arithmetic mean of large number of random observations. Large number of observations is considered as true or actual value. So जब भी हम experiment करते हैं, अभी हम सारे ये काम किस लिए कर रहे हैं? All those things we are doing for experiment. In the very first chapter, we saw that science is special because science has facility to do experiment. Experiment करने के लिए क्या चाहिए थे? Certain physical quantities. उन physical quantities को calculate करने के लिए, measure करने के लिए, we require some experimental method, some instrument, and in that measurement there will be some error. उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, तो हम जब भी कोई डेटा लिस्ट करेंगे या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, फाइनली वी हैव, सो दैट शुड नॉट बी डन ओनली फॉर वन टाइम, दैट शुड बी डन एटलीस्ट 5 टाइम्स, और फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं. दैट एवरेज इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू. उसको हम एक्चुअल वैल्यू एज्यूम करके एंड देन वी फाइंड आउट द एरर ऑन बेसिस ऑफ दैट एक्चुअल वैल्यू. तो जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी उतने के करस्पॉन्डिंग वी विल हैव वन एरर, एंड देन दैट एरर्स का भी हम फिर से एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. राइट, सो आई थिंक दैट वी विल डू नेक्स्ट क्लास. कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है. अभी जो हमने पढ़ा, इट वाज अ थ्योरेटिकल बोरिंग पोर्शन, बट ठीक है, कोई बात नहीं. इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग इट. एरर्स की कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर, जेई में भी आते हैं, और स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है. every experiment, every result, industry में या कहीं भी lab में, you have to always define how much is the accuracy of your reading or your measurement or your result. If it is less than 5%, that's called gold standard. जो आपने शायद word सुना हो, advertisement में use करते हैं. Less than 5% error is called gold standard.
So every experiment, every result, every reading has to be always given with the maximum the permissible error. So हर एक reading के साथ हमें उसकी maximum error calculate करनी पड़ती है, and that maximum error we have to put it right. So वो कैसे calculate करते हैं in the experiment, that we will be seeing next class. Method समझ में आ गया? कुछ ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जैसे कुछ कोई बात नहीं होती. अगर हमने 10 बार रीडिंग की है, 10 टाइम एक्सपेरिमेंट किया है, उन 10 का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एक्चुअल. फिर हर एक को सब्ट्रैक्ट करके उसकी रीडिंग में एरर निकालेंगे, एंड देन वी टेक द मीन ऑफ दोस 10 एरर्स अगेन. I mean, so again that is a more calculative tedious process. हमें इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, बस टेबल फॉर्म में लिस्ट करके सारी रीडिंग्स को we'll find out the actual value. With respect to actual value, we calculate error in each reading, and from the error in each reading, we will find out the average error or the mean absolute error. Right. So next class में हम error की questions करेंगे. अभी हमने सिर्फ आज theory पढ़ी है. Error कितने type की होती है, क्यों होती है, and how do we estimate the length? हाँ, parallax questions है NCERT से. I have given you 2 exercise homework from SL also on the basis of parallax method and those estimation of small size and large size. ठीक है. So Wednesday we will continue from here, and we'll finish the error part on the Wednesday most probably. राइट. तो आपको SL Aroda डाउनलोड करके PDF से क्वेश्चंस करने हैं. DPP 2 शायद शेयर की थी मैंने. मोर आई विल बी शेयरिंग फॉर द डायमेंशन टिल फ्राइडे. ट्राई टू फिनिश ऑल द डायमेंशन DPP so that डायमेंशन एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस के डाउट वी कैन डिस्कस. ओके देन, थैंक यू. इट वाज लिटिल बोरिंग बट ठीक है, कोई नहीं, समझ में आ गया. कुछ हमने यूनिट्स पढ़े. आई विल शेयर दिस PDF आल्सो, डोंट वरी. Yeah. Okay then. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.